हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, a prominent Indian nationalist leader, was convinced that India could not achieve independence without the use of force, and he believed that a military campaign was necessary to achieve this goal. In 1942, Bose formed the Indian National Army with the help of Japanese. Bose traveled to Japan in 1941 to seek their support in the struggle against British rule in India. The Japanese were interested in having Bose's help in their own efforts to expand their influence in Southeast Asia. Bose's vision was to create a military force to fight against the British in India with the help of Japanese weapons and training. The INA was formed in Singapore in September 1942 with the slogan Jai Hind, victory to India. The INA consisted of soldiers who were primarily from the Indian community in Southeast Asia. They were trained by Japanese officers and were equipped with Japanese weapons. The INA fought alongside Japanese forces in Burma and other parts of Southeast Asia during World War II. Bose's leadership of the INA and his military campaigns against the British in India made him a popular figure among many Indians. The consequences of the formation of the INA were significant. The INA's campaigns against the British in India and the Indian soldiers' role in the Burma campaign had a psychological impact on the British forces. The British were shocked that Indian soldiers had turned against them, undermining their confidence in maintaining control over India. The INA also had a significant impact on the Indian independence movement. Bose's vision of a socialist India with equal rights for all citizens inspired many Indians. The INA became a symbol of the struggle against British colonialism, and Bose's slogan of Jai Hind became a rallying cry for the independence movement. However, the INA's military campaigns were not successful in achieving their goal of freeing India from British rule. The INA suffered significant losses in battles and their efforts were undermined by the Japanese surrender in 1945. तो क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन पहले टिक करके भी इसको निकाल सकते थे आंसर, और पहले भी रीड, अगर पैसेज छोटा है तो पहले से रीड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न? प्राइमरी रीज़न क्या था फॉर द जापानीज टू सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी रीज़न क्या था? अभी हम पढ़े, दे वांटेड टू एक्सपांड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपांड करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 में है, दे वांटेड टू एक्सपांड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट देखेंगे 35 में है, व्हाट अल्टीमेटली अंडरमाइन द INA's efforts to free India from British rule? इसमें ब्रिटिश रूल
से बचने के लिए क्या एफर्ट था? द जापानीज सरेंडर इन 1945, ये पढ़े थे। द जापानीज सरेंडर इन 1945। गांधी स्टेट का तो कोई मेंशन नहीं हुई है। इंफीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस, ये भी नहीं दी हुई थी। द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन एंड ब्रिटिश पीपल, ये भी मेंशन नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 36 में है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोसेस स्लोगन जय हिंद, इसका क्या था? ऑप्शन नंबर 1 में है इट सिंबलाइज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनलिज्म, ये था। इट सिंबलाइज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनलिज्म। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आंसर मिला, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 37 है हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, किस तरह उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए उनका व्यू क्या था? मिलिट्री कैंपेन्स, ऑप्शन नंबर 4 मिलिट्री कैंपेन्स। पॉलिटिकल नेगोशिएशन, ये भी नहीं मेंशन हुआ था। इकोनॉमिक सैंक्शन भी नहीं हुआ था। नॉन वायलेंट मीन्स, ये भी नहीं था। तो मिलिट्री कैंपेन्स। तो पैसेज अगर पहले से पढ़ के रखते हैं तो आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। तो आज तक इतना ही। थैंक यू।